व्हाट इज मोरल हजार्ड इन बैंकिंग, बैंकिंग में मोरल हजार्ड किसे कहते हैं, हाउ इट इज डिफाइंड अंडर रिस्क मैनेजमेंट, what are the concepts under moral hazard, what when banks face the situation of moral hazard, everything we will be discussing in this session. And I must promise all of my students today that at the end of this session everybody will be a position to clearly elaborate about moral hazard without any single doubt. आज के इस सेशन के बाद मोरल हैजार्ड के बारे में किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है। इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का सेशन। रिस्क मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल सेशन है ऑफ यूनियन बैंक रिस्क मैनेजमेंट और एनी रिस्क मैनेजमेंट एग्जाम फॉर दैट मैटर। Before that, if you have not subscribed to Knowledgist, kindly subscribe us now. And here is the crash course of risk management. Most of the risk management students have already enrolled, and if you have not done it, then find out where are you. Because why to enroll with Knowledgist? Knowledgist के साथ आपको जुड़ना क्यों चाहिए कि किसी भी एग्जाम हो, लेटरल एंट्री या फिर जीबीओ सेगमेंट में, लास्ट 1 ईयर से, लास्ट 1 साल से हर एक एग्जाम में 100 में से 70 हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। और किसी भी एग्जाम में एसबीआई, सीबीओ, पीएनबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिस्क, क्रेडिट, ट्रेजरी या फिर कनारा बैंक एसओ का रिटेन, बैंक ऑफ इंडिया का फाइनल रिजल्ट या फिर अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फाइनल रिजल्ट, किसी भी एग्जाम में हर 3 बंदे में से एक बंदा is from Knowledgist. Out of every 3 people selected, 1 is from Knowledgist. Last night the Bank of Maharashtra result is released. Out of 116 people selected, we produced more than 39 specialist bankers for this bank. So that has become possible with all your love and support. So without wasting any further moment, we'll start about moral hazard. Here is the definition. आपके सामने ये definition आपके स्क्रीन के ऊपर है। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बट मैं उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए क्लियर करूंगा। पहले डेफिनेशन को जानते हैं। मोरल हैजार्ड रेफर्स टू ए सिचुएशन इन व्हिच वन पार्टी डिसाइड्स टू टेक एडिशनल रिस्क दैट नोइंग दैट समवन विल बियर द कॉस्ट इफ थिंग्स गो रॉन्ग। ठीक है, मोरल हैजार्ड उस सिचुएशन को बोलते हैं जहां पर एक पार्टी ज्यादा रिस्क लेता है, जरूरत से ज्यादा रिस्क लेता है, ये जानते हुए कि अगर कुछ गलत होता है या फिर कुछ नुकसान होता है तो नुकसान की भरपाई कोई दूसरा थर्ड पार्टी करेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। चलिए पहले मैं बता देता हूं कि जब भी कोई पार्टी या फिर 2 पार्टी एग्रीमेंट करते हैं, वहां पे मोरल हैजार्ड की सिचुएशन अराइज होता है। ठीक है, और मोरल हैजार्ड उस सिचुएशन को बोलते हैं जहां पे जो इंफॉर्मेशन है दोनों के पास बराबर का नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए आपको रिस्क मैनेजमेंट के सिलेबस पता नहीं है और मुझे रिस्क मैनेजमेंट के सिलेबस पता है, और मैं जानबूझकर रिस्क मैनेजमेंट के कुछ ऐसे टॉपिक से आपसे हाइड करूंगा जिसको जानने से आप क्वालिफाई कर सकते थे एग्जाम, बट आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो उस सिचुएशन को मोरल हैजार्ड कहते हैं। जानबूझकर कोई 2 पार्टी जिनके साथ एग्रीमेंट होता है, हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं मेंटर बनूंगा, आप स्टूडेंट बनेंगे, यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ, और किसी भी एग्रीमेंट में जहां पर एक पार्टी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, मान लीजिए मुझे रिस्क मैनेजमेंट का सब कुछ पता है और आपको रिस्क मैनेजमेंट आप अभी शुरू कर रहे हैं और मैं आपको कम इंफॉर्मेशन दूंगा या फिर मैं जानबूझकर कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, उसको बोलते हैं मोरल हैजार्ड। और ये भी हो सकता है कि जहां पर एक पार्टी जानबूझकर ज्यादा रिस्क ले सकता है, कि ऐसा भी हो सकता है मैं आपको बोलूंगा कि मैं आपको किसी भी हालत पर रिस्क मैनेजमेंट का एग्जाम क्वालिफाई कराऊंगा, सब्जेक्ट टू आपको पढ़ना होगा, बट मैं ये एग्रीमेंट में ये बात लिखा नहीं होगा, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट में क्वालिफाई करवा के रहूंगा। तो आपने डिसाइड किया कि ये जानते हुए अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, मैं आपको नुकसान का भरपाई करूंगा, आपको 10 लाख दूंगा। एक एग्रीमेंट हो जाएगा आपके और हमारे बीच में। There will be an agreement between you and me. If you don't qualify in a risk management exam, I will pay you 10 lakhs. So what will you do? You will deliberately take an additional risk for not reading about this exam, not preparing for the exam, because you know
that in case you fail, I am here to bear your cost. So that is called moral hazard. मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। जैसे कि आप कार का इंश्योरेंस लेते हैं, आपको पता है कि कार डैमेज होता है, तो कार इंश्योरेंस कंपनी आपको कार की डैमेज की पैसा देगा। नो डिप्रिसिएशन वाला आपने लिया है, कुछ भी एक्सीडेंट हो, प्लास्टिक इक्विपमेंट्स का भी डैमेज हो, कुछ भी हो, 100% कॉस्ट आपको इंश्योरेंस कंपनी देने वाला है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जानबूझकर रेकलेस ड्राइविंग करेंगे, जानबूझकर किसी दूसरे गाड़ी के साथ ठोक देंगे, ताकि क्या होगा, आप कि जो नुकसान होगा वो इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करेगा। इस सिचुएशन को मोरल हजार्ड कहते हैं। दिस इज वन टाइप ऑफ मोरल हजार्ड। वो एक दूसरा टाइप का मोरल हजार्ड था जहां पे कुछ लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होने के कारण से वो उसकी फायदा उठाते थे, उस सिचुएशन को मोरल हजार्ड कहते थे। यहां पर आपको पता है कि आपके लिए रिस्क कोई और ले रहा है, तो आप जानबूझकर पढ़ेंगे नहीं या फिर जानबूझकर अपनी गाड़ी को ठोक देंगे। इस सिचुएशन को भी मोरल हजार्ड कहते हैं। ऑल्सो आई स्पोक लॉट ऑफ हिंदी, लेट मी ऑल्सो टेल यू इन इंग्लिश दैट देयर कुड बी टू सिचुएशंस वेयर मोरल हजार्ड कैन हैपन। Whenever we people go into an agreement with another party, or whenever two party agrees upon an agreement, the situation of moral hazard arises. जहां पर भी एग्रीमेंट होता है वहां पर मोरल हजार्ड की सिचुएशन आता है। फॉर दैट मैटर, इफ यू थिंक दैट your car is insured by an insurance company, any damage that occurs to your car will be borne by the car insurance company. So you decide to drink and drive and recklessly you met an accident. So you took additional risk knowingly that any accident will be borne by any cost will be borne by the insurance company. That is a moral hazard. In term and condition, nowhere it is mentioned that if you deliberately struck your car, deliberately you met an accident, the insurance company will pay. That meant that term and condition is not mentioned in your insurance paper. You know that and you exploit the insurance company. Another beautiful example I will also give you, that the common man having less knowledge about medical industry and he go for a heart surgery, and during the heart surgery the doctor comes to the family members of the patient and asks them to deposit rupees 3 lakhs immediately for buying a strain, for buying some medical equipment. The common man's family doesn't know about the healthcare cost. So the medical practitioner is having more information about his business and he decides to exploit the common man with no no harm to the medical community. With utmost respect, this is used only for example. I don't want to harm anyone's sentiment, because I say in such specialized industry what happens, one is having more information and the other one is having less information. So the one who is having more information, what he does, he can exploit the second party. In case of medical things, where the medical practitioner having more information can use his additional information to exploit the third party, because the third party doesn't know that what can be done, right? मान लीजिए मैं इसको हिंदी में भी समझा देता हूं। कोई किसी का हार्ट सर्जरी हो रहा है और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको बहुत ज़्यादा पता है, और जहां पर बिना ऑपरेशन के काम चल सकता था, मेडिकल प्रैक्टिशनर अचानक आके फैमिली मेंबर को बोलता है आपको तो हार्ट सर्जरी करना ही पड़ेगा, आपको 3 लाख रुपए जुगाड़ करना पड़ेगा, अभी इमीडिएटली 3 लाख लाइए, हम हार्ट सर्जरी कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, आपको कुछ पता नहीं होता है और आप 3 लाख जुगाड़ करके दे देते हो और ऑपरेशन हो जाता है। बाद में पता चलता है कि ऑपरेशन की जरूरत भी तो नहीं थी उस समय। तो यहां पर क्या हो रहा है, मोरल हजार्ड। यू बिलीव्ड ऑन दैट मेडिकल प्रैक्टिशनर, बट ही हु हैज इन पोजेशन ऑफ मोर इंफॉर्मेशन थिंग्स टू एक्सप्लॉइट यू। ठीक है, वो जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन था, इस केस में मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन था, तो उसने डिसाइड किया कि वो कस्टमर को या फिर पेशेंट को एक्सप्लॉइट करेगा। इस सिचुएशन को मोरल हजार्ड कहते हैं। ठीक है, मोरल हजार्ड इज ए सिचुएशन इन व्हिच वन पार्टी गेट्स इन्वॉल्व्ड in a risky event knowing that he is protected against the risk
and the other party will incur the cost. आपको पता है आप कुछ भी करेंगे, जैसे कि बॉलीवुड मूवीज में देखा जाता है कि जो गुंडे का लड़का होता है वो कुछ भी करता है, उसको पता होता है कि मेरे माय फादर इज एमएलए, माय फादर इज ए मिनिस्टर, मैं कुछ भी करूं, मैं एक्सप्लॉइट करूं, लोगों को मारूं, मेरे बाप हैं वो मुझे बचा देंगे. तो सिमिलरली इन एन एग्रीमेंट, when one party knows that whatever I do, but the risk will be borne by the insurance company or the other party who has agreed to bear the cost, so deliberately the other party makes a mistake or goes to do additional risk, तो उसे कहते हैं moral hazard. ठीक है. It arises when both of the parties have an asymmetric information or incomplete information about each other. Asymmetric information मतलब इसके पास जो information है उसके पास वो information नहीं है. ठीक है. तो एक पार्टी क्या करता है, जैसे कि बैंकिंग टीचिंग के केस में होता है, बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस जो पीओ और या फिर क्लरिकल एग्जाम में एक्सपर्ट हैं, वो सिर्फ कवर चेंज करके रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेक्स मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर सेगमेंट में एग्जाम की एडवर्टाइज दे देते हैं, बैच एनरोल करवा देते हैं, और बाद में स्टूडेंट्स को जाके पता चलता है कि दे आर गुड एट बैंकिंग, दे आर गुड एट पीओ एंड क्लर्क, but they are not too good at all these specialized exams we need bankers to prepare. तो वही होता है. ठीक है. वो उनको पता है कि कस्टमर स्टूडेंट्स विल कम डेफिनेटली एंड दे जस्ट चेंज द कवर, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होता है और स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कहाँ से प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, और वो जो मटेरियल दे देते हैं स्टूडेंट उसी को प्रिपेयर कर लेते हैं. बैंकिंग में करंट अफेयर्स दे देते हैं और स्टूडेंट्स प्रिपेयर एंड फाइनली दे फाउंड दैट नथिंग कम्स इन न्यूज़पेपर. तो ये है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन. स्टूडेंट्स जो जिसके पास टाइम कम रहता है प्रिपरेशन करने के लिए, he grabs any subject, he grabs any course that is being sold, being packaged with a lucrative cover. So similarly, when asymmetric information, when someone is having more information about medical industry and the patient who is a layman having less knowledge about medical industry goes with the advice of the medical practitioner. So be aware of such things. Whenever you enter into any agreement, try to have some basic knowledge of that, even in case of your banking preparation. चलिए, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में कहां कहां पे आ सकता है ये सिचुएशन. आई विल बी टेलिंग यू वेयर इन बैंकिंग इंडस्ट्री you can face such situation. In banking, there is a risk that the borrower might engage in activities that are undesirable from the lender's point of view because they make him less likely to pay back the loan. तो बैंकिंग इंडस्ट्री में जब लोन लेने देने की बारी होता है तो जो बोरोवर है उसके पास अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा और वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को मिस यूटिलाइज करके अगर चीट करना चाहे अपने लेंडर को या फिर बैंक को, उस सिचुएशन को मोरल हजार्ड कहा जाता है. इट इज अ सिचुएशन वेयर ए बैंक डिस्कवर्स दैट इट हैज बीन चीटेड बाय इट्स बोरोवर who has resorted to incorrect means or improper utilization of the disbursed loans for unapproved actions. ठीक है. तो बैंक को जहां पे लगता है कि कस्टमर ने उसको चीट किया है, जिसने लोन लिया है, एंड यूज को वायोलेट किया है, एंड यूज नॉर्म्स को, जैसे कि लोन जब लेते वक्त एक एंड यूज नॉर्म होता है. When you take a loan, there is an end use norm. You cannot take a loan for buying properties, right? You cannot take a loan to buy stocks. अगर आप पीएल पर्सनल लोन ले रहे हैं, आप उसको लेके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, लैंड नहीं खरीद सकते. दैट शुड बी यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस. आप अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हैं तो बिजनेस लोन आप लेके पर्सनल यूज नहीं कर सकते, आपको बिजनेस के लिए ही यूज करना पड़ेगा. ठीक है. आप लोन लेके गोल्ड नहीं खरीद सकते, आप लोन लेके यू कैनॉट बाय व्हाट यू से, आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं मैरिज के लिए, बट आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते. इस तरह के एंड यूज नॉर्म्स होता है लोन्स में. ठीक है. लाइक इन बिजनेस लोन यू कैनॉट टेक ए बिजनेस लोन फॉर पर्सनल यूज. MD of a company cannot take a loan in the name of his company for his daughter's marriage. So this kind of diversion of fund is also treated as cheating and it is also a part of moral hazard. Okay.
So there is a index of moral hazard. We are not discussing in this line. Index of moral hazard is by industries like called civil. They find out the name of the willful defaulters and find out that which bank has what type of potential about exposing themselves to the moral hazards. Okay. सो ये सारे सिचुएशंस हैं मोरल हजार्ड्स के। बैंकिंग इंडस्ट्री में इन जगहों पर मोरल हजार्ड आ सकता है। एनपीए मैनेजमेंट में, जैसा कि आपको पता होगा कि एनपीए मैनेजमेंट में बहुत सारा नॉर्म्स होता है। विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए नॉर्म होता है, या फिर आप कोई कस्टमर जानबूझ के पे नहीं कर पा रहा है, उसको वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर दिया जाता है। मान लीजिए उसका लोन का आउटस्टैंडिंग है 1 लाख, वो लंबे समय से अपना लोन चुकता नहीं कर पा रहा है, तो बैंक उसको बोलेगा 50,000 दीजिए, लोन चुकता, हम लोन क्लोज कर देते हैं। कुछ तो रिकवर होगा बैंक के लिए, पूरा लॉस होने के बजाय कुछ भरपाई हो जाएगा, तो बैंक भी फायदे में रहेगा, कस्टमर भी फायदे में रहेगा। दैट कुड बी ए कंडीशन ऑफ मोरल हजार्ड, क्योंकि कस्टमर जिसके पास पेइंग एबिलिटी था उसको ओटीएस के सारे नियम पता थे, इसीलिए उसने खुद अपने लोन को एनपीए में डाला और उसके बाद उसने वन टाइम सेटलमेंट किया। ठीक है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, कस्टमर ने इंफॉर्मेशन का गलत फायदा उठाया। कस्टमर को पता था कि उसका लोन अगर एनपीए में जाता है तो उसको वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा, तो कस्टमर ने जानबूझकर अपना लोन एनपीए में डाला। तो दिस इज वन टाइप ऑफ मोरल हजार्ड इन बैंकिंग। So let me tell this in English. NPA management is also part of moral hazard, because if customer have more information about NPA management, he can divert his funds, he can route the bank in the way he wants. Like he knows that there is one time settlement offers in banking. If he makes his loan NPA for a longer period of time, bank will come and tell him to settle with a 50% amount. So he deliberately, even after having the ability to pay, he deliberately stops paying that loan amount. So this is one type of NPA moral hazard. Credit management. In credit management also banks do face moral hazards, like someone is taking a business loan for personal use. If there will not be an effective credit management, banks may get exploited by the customers, or there is an end use, there is a norm of end use. Customers cannot take loan to buy shares or to invest in stocks and mutual funds, but customers are taking loans to invest in that. One type of rule I must remind you, that in personal loan you cannot take a PL, personal loan, for buying a land. But many of the people who take a personal loan in purpose of buying a land, and you cannot also take a loan for arranging the down payment for another loan. Suppose you are buying a loan, you are buying a home and you are taking a home loan. The home loan cost is 100 lakhs and the bank says I can give you 85 lakhs and you have to arrange another 15 lakhs. So what you do, you go to another bank and take a loan of 15 lakhs, 15 lakhs of PL, and you arrange the rest amount for for down payment. So that is also hiding the information, or the customer is more aware than banker and he cheats the bank by these means. This is also one type of moral hazard. So then is the special relief packages. Nowadays, due to COVID, the government is offering special relief package. The loans of the kisans, of the farmers, are being waived annually, or when the time comes of election, people take advantage of that. I have seen many people waiting for the next election so that their loan will be waived. Many people deliberately take loan when there is no necessity of them to take the loan, but they deliberately take the loan in a view, in a hope that when the next government will come, they will waive off the loan. So that is also one type of moral hazard. एक टाइप का मोरल हजार्ड ये भी है कि कस्टमर को लोन लेने की जरूरत नहीं है, मगर कस्टमर को पता है कि स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलने वाला है, बाढ़ आएगा तो लोन माफ हो जाएगा, और या फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगा तो वो छूट दे देगा या फिर वेव कर देगा। तो इसके लिए ऋण माफी की योजनाएं भी आते जाते रहते हैं, तो इसीलिए जानबूझकर वो लोन देता है, लोन की पैसा चुकता नहीं करता, इस आस में वो रहता है कि कब नया गवर्नमेंट आएगा और पूरा लोन ऋण माफी की एक योजना शुरू कर देगा इलेक्शन के लिए और हमारा लोन माफ हो जाएगा। इसको दिमाग में रखते हुए वो लोन लेता है। दिस इज वन काइंड ऑफ मोरल हजार्ड।
लिक्विडिटी असिस्टेंस टू एमएसएमई, आपको पता होगा कि जो रिवैम्प हो रहा है एमएसएमई इंडस्ट्री का आफ्टर कोविड-19, देयर आर सो मेनी स्कीम्स being floated for MSME, for the recovery of MSME. There are liquidity scheme. Sometimes the MSMEs, the industry exploit the banks to get additional loan funded, and they misutilize their position, or they hide the information to the bank to get advantage of bank loans, etc. So this is also one kind of uh, moral hazard. Okay, so the loan restructuring, I must say, in the loan restructuring, many MSMEs who don't want loan restructuring, they go with loan restructuring so that they don't need to pay the loans immediately. They will pay the loan in a longer period of time, and by the time they will utilize the fund for other works. Okay, जैसे और DRI एंड रिलैक्स्ड KYC नॉर्म्स में भी मोरल हैजार्ड होता है. DRI मतलब डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट. People deliberately take loan in differential rate of interest when they are in a position to pay off the loans in the market rate. Okay, differential rate of interest are for the weaker sections. Some well-to-do family members also take loans in by citing they are poor, by trying to get loans under various other government sponsored schemes. एंड रिलैक्स्ड KYC नॉर्म्स, यहाँ पर मोरल हैजर्ड्स आता है कि जहाँ पे जैसे BSBD स्मॉल अकाउंट्स एटसेट्रा से बेसिक सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट, इस तरह के अकाउंट में जो रिलैक्स्ड KYC नॉर्म रहता है 1 साल के लिए, जानबूझकर कुछ अकाउंट्स ऐसे खोले जाते हैं जहाँ पर anti money laundering kind of activities do happen. So these kind of things are part of moral hazard in banking. Hope this session is useful for all the risk managers and bankers out there. And if you have not subscribed to your channel Knowledgist, then kindly subscribe and do join the courses. Please take a decision when you decide to join, because you have very limited time to prepare. If you will be in the hands of the commercial organizations, the moral hazard definitely be there. Thank you for being with me. Thank you for being with Knowledgist.